जय जगन्नाथ पिला माने स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट को। आशा करुच्ची आपण मानक पाठपढ़ा सब ठीक ठाक चली आ भगवान निकट में एति प्रार्थना कि 2025 सरिया पूर्व समस्त गोटे गोटे निश्चिंत जॉब पाई जाओ। तो आज आउ डेरी नक स्टार्ट कर आज सेक्शन। आज सेक्शन आम जीके और जीएस मक टेस्ट 16टा डिस्कसन करवा एवं यहाँ केवल आरआई कि ओडिशा पुलिस एग्जाम इम्पोर्टाट नुह। यहाँ जेकोसी तुम एग्जाम दियो एसएससी हो कि ओएसएससी हो गला कि ओ ट्रिपल एस जेकोसी एग्जाम इम्पोर्टाट रहिबो। तो चलते डेरी नक स्टार्ट करवा आज सेक्शन। देखा आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही। भिडियो देखा पूर्व भिडियो गोटे लाइक करनी और निजे सांगसाथी मान सेयार करनी। देखा आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही। आज फास्ट क्वेश्चन होची मंगलयान वाज लॉन्च्ड बाय हुईज इंडियन एजेंसी। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। मंगलयान कहा द्वारा लॉन्च कराइथिला ना आंसर हो जिवो इसरो द्वारा। इसरो रो फुल फॉर्म कौन? इसरो रो फुल फॉर्म वाला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मन रहा इसरो फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एवं तार फॉर्मेशन केबे हितला इसरो ना 1969 रे हितला। 1969 रे हितला अगस्त 15 ना डीआरडीओ अगस्त 15 रे हितला। तो मसीहा होची 1969। तो डेटा केबे मो ठीक से मन नहीं, जदि जार मन अच्छी कमेंट सेक्शन में जनइब है। देखा एक्स्ट्रा फैक्ट कौन रही। मंगलयान विषय टी देखी ना। मंगलयान्स मेन ऑब्जेक्टिव वेयर टू फोल्ड: टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजीज फॉर डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इंटरप्लेनेटरी मिशंस एंड टू कंडक्ट साइंटिफिक स्टडीज ऑफ मार्स सरफेस फीचर्स। मंगलयान आमर कौन लॉन्च करथिला? मन को एटा मार्स लॉन्च करथिला, माने मार्स को आमर मंगल ग्रह जहाँ कहूँ से लॉन्च कराइथिला। मोर्फोलॉजी, मिनरालोजी एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग इंडिजिनियस इंस्ट्रूमेंट्स। Then the mission successfully tested key techniques for interplanetary exploration and provided a valuable data on the red planet while also establishing India as the first Asian nation to reach Mars orbit। से कौन कौन आम जो रेड प्लानेट क्या कहुए मार्स को कहुए तार ऊपर माने डाटा कलेक्ट करने तार आटमॉस्फेयर हो गला कि तार मोर्फोलॉजी मिनरालोजी जहाँ अच्छी तापर स्टडी करने पठाई क्या ना मंगलयान को। एवं एटा आमर हूँ इंडिया हूँ फास्ट एशियन कंट्री जी कि मंगल ग्रह रे पहुँची। देन होगा आम कहवा केबे लॉन्च होता ना इसरो आमर ताको लॉन्च करथिला केबे 2013 नवेम्बर 5 रे। डेटा मन रखिबो इसरो लॉन्च करथिला 2013 मसीहा एवं नवेम्बर 5 तारिख रे। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एम्पायर हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। को एम्पायर को हमरा नेपोलियन ऑफ इंडिया कहुच्छे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ना ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ना ऑप्शन सी अशोक, ना ऑप्शन डी कनिष्क। आंक भितर क्या को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहुच्छे ना समुद्रगुप्त को कहुच्छे। आंक भितर एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे देखी ना। समुद्रगुप्त इज फेमस फॉर बीइंग ए लेजेंडरी वॉरियर एंड कॉन्क्यूअर who greatly expanded the Gupta Empire, a military genius described as Napoleon of India by historian Vincent Smith। ये जो नेपोलियन ऑफ इंडिया टा से टाइटल टा किए देथिला ना विंसेंट स्मिथ देथिले टाइटल टा मन रखिबो। ए जो टाइटल टा मिलिथिला समुद्रगुप्त को एटा देथिले विंसेंट स्मिथ। Then he is also renowned for his patronage of the arts and cultures which contributed to India's golden age। ताकर आर्ट आउ कल्चर जो गोल्डन एज पीरियड टाक कहुए। देन बियॉन्ड हिज मिलिटरी एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ही वाज स्किल्ड म्यूजिशियन, ए compassionate administrator and an efficient ruler who laid a strong foundation for the prosperity of the Gupta Empire। एमित्रे भी गुप्त एम्पायर को आमर कौन कहुए गोल्डन एज माने गोल्डन पीरियड बोली कहुए। तो समुद्रगुप्त समय को मत गोल्डन पीरियड बोली कहुए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्तिर कंपोजर किए?
आंसर हो कौन ना हरिसेन। आलाहाबाद प्रशस्तिर ताले कंपोजर किए ना हरिसेन। यहाँ होता क्या समय ना समुद्रगुप्त समय। आ हरिसेन जड़े कोर्ट पोएट थे। देखिए भितर एक्स्ट्रा फैक्ट कौन रही द आलाहाबाद प्रशस्ति और आपको अलग नाँ कहुए कौन ना प्रयाग प्रशस्ति कहुए क्या ना आलाहाबाद प्रशस्ति को इज ए संस्कृत इनस्क्रिप्शन ऑन ए पिलर इन आलाहाबाद दैट सर्व्स एज ए पेनग्रिक प्रेजिंग द गुप्त रूलर समुद्रगुप्त लिखा अच्छी। यहाँ कौन लिखाई ना संस्कृत रे कंपोस्ट बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन द्वारा यहाँ कंपोज कर डिटेल्स समुद्रगुप्त मिलिटरी कन्क्वेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ द गुप्त एम्पायर providing crucial information for historians about the political and geographical landscape of 4th century India। ताले तेरा कौन कौन ऊपर वर्णना कराई ना समुद्रगुप्त मिलिटरी कन्क्वेस्ट ऊपर वर्णना कराई पॉलिटिकल अचीवमेंट कौन थी सब तो गुप्त एम्पायर केमती एक्सटेंडेड होता तो कौन ना हिस्ट्री विषय में वर्णना कराई। The pillar itself contains 4 different inscriptions including earlier Ashokan inscription and the later Persian inscription by Jahangir। एथरा आ मध्ये कौन होची जहांगीर जो अशोकर इयरलियर एवं लैटर पर्शियन इनस्क्रिप्शंस जहांगीर द्वारा वर्णना करा जायछि। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द विडो रिमैरेज एक्ट पास्ड इन व्हिच ईयर। द विडो रिमैरेज एक्ट पास्ड इन व्हिच ईयर। ऑप्शन ए 1856 ना ऑप्शन बी 1858 ना ऑप्शन सी 1829 ना ऑप्शन डी 1869। कौ मसीह आमर जो थिला विडो रिमैरेज एक्ट हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट एटा केबे पास कराइथिला आंसर होची 1856 मसीह रे। अब सेर को एक्स्ट्रा फैक्ट अछि देखिना बा द हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1856 वाज ए लॉ पास्ड in British India that legalized the remarriage of Hindu widows। एटा मन रखिला 1856 पास होता हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट थिला एटा रिमूविंग लीगल ऑब्स्टैकल्स एंड सोशल स्टिग्मास अगेंस्ट इट। देन आसला कैंपेन बाय सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जदि पचार किए या उच्छेद करथिले ना आंसर कौन जे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड एनाक्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग जदि कि ब्रिटिश वाइसराय को कहा समय होता ना लॉर्ड कैनिंग से एडमिनिस्ट्रेशन रे। इट ग्रांटेड रिमैरिड विडोज राइट एंड इनहेरिटेंस सिमिलर टू देयर फर्स्ट मैरिज बट विथ सम forfeiture of previous rights। The act was a significant social reform following the abolition of sati and aimed to improve the status and empower women। हमरा गोटे जमी कौन ना आबोलिशन ऑफ सती से यहाँ उच्छेद कराला कौन ना हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व जब वीडियो को आपण मानक लागू थाए किसी भी बेनिफिट होची ताहले वीडियो गोटे लाइक करनी और चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँद्वारा आमर जहाँ भी अपलोड हम प्रथम नोटिफिकेशन आपण मन पाखे ही पहुँची पार। आर PDF केमती पाइबे वीडियो शेष में कहनेबी। जेहेतु एग्जाम बहुत कम दिन रहा यही कम समय काली तो स्टार्ट हो सीजीएल टा अलरेडी स्टार्ट हो गलानी आमर ओडिशा पुलिस और आरआई एग्जाम अक्टोबर मासरे स्टार्ट हो जाउची। तो एबेठू पूरा माने जीके को जीके भाया ही पढ़ातु जमती मैंने समस्त वीकनेस थाए जीके। तो जीकेटा हूँ गोटे जेहेतु भास्ट सब्जेक्ट तो आम कौन से गोटे स्पेसिफिक एग्जाम कहबानी जे क्वेश्चनटा ये एग्जाम रे पड़ुची तो आम जीके को कम्प्लीटली पढ़ा उचित। तो सब एग्जाम से इम्पोर्टाट रहा। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन द परमानेंट सेटलमेंट वाज एनफोर्स्ड ऑन 1693 ना 1793 ना 1893 ना 1993। परमानेंट सेटलमेंटा केबे एनफोर्स होइथिला ना 1793 मसीह क्या द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए ता विषय कौन अच्छी एक्स्ट्रा फैक्ट तो परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज जमीदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट अन्य नाम हूँ कौन ना जमीदारी सिस्टम was a land revenue system introduced by the British East India Company in 1793 under Lord Cornwallis। 1793 होता क्या द्वारा ना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा होता।
It is granted जमींदार्स हेरिडिटरी ओनरशिप ऑफ लैंड इन बेंगल एटा बेंगल रे बेसिकली हितला बेंगल बिहार ओडिशा तीनटा स्टेट रे बेंगल माने वेस्ट बेंगल बिहार आ गोटे होची ओडिशा taking them with collecting a fixed revenue from peasants to pay the company peasants माने होचନ୍ତି ए जो कोन से माने कहते जो माने चाष करते फार्मर तांको peasant बोल कहते This fixed permanent tax aimed to provide stable income for the British government and create a loyal landlord class, though it often led to peasant exploitation and hardship. Then देखिबा next question. The Big Bang theory is related to which of the following? Big Bang theory हमरा कहा सहित related आम ये जहाँ भी क्वेश्चन रखीचे आम हिस्ट्री रू किसी रखीचे पॉलिटी रू किसी रखीचे देन होगला आम जोग्राफी रू किसी रखीचे सहित करेन्ट अफेयर्स रू किसी अच्छे स्टैटिक पार्ट्स 20टा क्वेश्चन भितर सब आम 3-4 लेखा कभर करचे एटा आसला जोग्राफी सेक्शन रू हिस्ट्री सेक्शन सरीगला यहाँ हूँ जोग्राफी सेक्शन द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिग बैंग थ्योरी ता कहा सहित रिलेटेड ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी ना ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ना ऑप्शन सी ओरिजिन ऑफ हिमालय ना ऑप्शन डी एरप्शन ऑफ वोल्कानोज ताले हमरो बिग बैंग थ्योरी ता रिलेटेड करूची ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देन देखिबा एक्स्ट्रा फैक्ट कोन छी The Big Bang theory is a dominant scientific model explaining the origin and evolution of the universe. इन कहले origin of universe को दर्शाउची proposing that the universe began as an infinitely hot dense point that rapidly expanded and cooled over 13.8 billion years ago. No, 13.8 billion years. These processes created all of space, time, matter, and energy, and its key pieces of evidence include the expansion of the universe, the cosmic microwave background radiation, and the observed abundance of light elements. देखो ये थ्योरी रे कहाँ कहाँ ऊपर वर्णना कराई डिटेल देती को पढ़ो कहाँ कहाँ ऊपर सब माने थ्योरी रे कहाँ कहाँ ऊपर पर्यवेसित देन आमर बिग बैंग थ्योरी किए प्रपोज करथिले जो इटा को ना मन रखिबा जॉर्ज लामित्री ताका ना कोन जॉर्ज लामित्री बिग बैंग थ्योरी देथिले एटा एग्जाम रे बहु एग्जाम रे एटा 50 सलानी एटा मो भूली जाई छी त लिखिया को मन रखि दियो जे जॉर्ज लामित्री देथिले बिग बैंग थ्योरी देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द मिल्की वे गैलेक्सी इज क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी ना इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी ना इरेगुलर गैलेक्सी ना राउंड गैलेक्सी आमर मिल्की वे गैलेक्सी आमर जो सौरमंडल जो रही कौन कहते सोलार सिस्टमटा सेटा हूँ मिल्की वे गैलेक्सी गोटे पार्ट ना गोटे अंश आमर मिल्की वे गैलेक्सी केमती ना स्पाइराल स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना Barred spiral galaxy. This specific classification indicates the presence of a large bar-shaped structure of stars its center. एटा कौन पे देखो माने कौन को है ना मिल्की वे गैलेक्सी बोली को है द स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर द स्पाइरल कौन पे को है एटा इज द रीजन स्पाइरल आर्म्स में कौन like other spiral galaxy the Milky Way has arms that curved outward from the central bar माने सेंटर से आउटवर्ड को जाइए कंटेनिंग स्टार्स गैस एंड डस्ट क्या कंटेन कर स्टार को गैस को एवं डस्ट को कंटेन कर देन आवर गैलेक्टिक होम द मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सन एंड आवर सोलार सिस्टम एवं कहली आमर जो सोलार सिस्टमटा क्या अंडर रे जाउची मिल्की वे गैलेक्सी अंडर रे आमर जो सौर सिस्टम को से पूरा धरी माने कौन ता अंडर रे रहउची Earth is located along one of the spiral arms. Earth हमर मध्य गोटे spiral arm मध्य रहउची. Appearance from Earth. From our vantage point on Earth, the Milky Way appears as a faint milky band of light stretching across the night sky. एटा गोटे माने कोन धूसर बा पाउंस रंगर देखा जाए मिल्की वे गैलेक्सी टा माने मिल्की टाइप रा पाउंसिया कलर. देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Which is the brightest star outside the solar system? Option A Sirius ना option B Proxima Centauri ना option C Alpha Centauri ना option D Beta Centauri.
आमर आउटसाइड तो सोलार सिस्टम सबुठ कौन कौन ना ब्राइटेस्ट स्टार कोटा आंसर हो कौन ना सीरियस। अब सर एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना अदर नेम तार कौन ना डॉग स्टार अल्फा कैनिस मेजर्स कन्स्टेलेशंस हूँ कैनिस मेजर द ग्रेट डॉग बोली कहुए। देन अपीयरेंस हूँ इट इज ए बाइनरी स्टार सिस्टम मीनिंग इट इज एक्चुअली ए ट्विन स्टार। सिग्निफिकेंस कौन हो ना इट्स इमोन्स ब्राइटनेस मेड इट नोटिसेबल टू एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज इजिप्शियन who connected its appearance with the flooding of the Nile River. Name origin तार कौन its name comes from the Greek word Sirius meaning sparkling बा glowing। ये जो मन रखिबा ना सीरियस कौन पाई दिया है बा को वर्ड रे एटा आछे जो सीरियस तो स्पेलिंग टा एमती अर्थ हो स्पार्कलिंग बा ग्लोइंग बा चकचक करवा से तो अधिक ब्राइटेस्ट चकचक करे से कहुई कौन सीरियस बोली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमेट्स रिवॉल्व्स अराउंड ऑप्शन ए सन ना ऑप्शन बी अर्थ ना ऑप्शन सी वेनस ना ऑप्शन डी मून। कॉमेट्स गुराक क्या चारिपाखे कौन करती ना परिक्रमण करती बा घूर्णन करती आंसर कौन हो ना सन चारिपटे। आमर गोटे हार्लिंग कमेंट्स हार्लिस कमेंट हार्लिस कमेंट यहाँ केते वर्ष को थरे आसे ना 76 वर्ष थरे देखा जाए यहाँ मन रख। हार्लिस कमेंट आम 76 वर्ष को थरे देखा जाए। कमेंट माने धूमकेतु है अर्थ हूँ धूमकेतु। देन द एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना comets revolve around the sun in elliptical orbit बा ओभाल शेप्ड कहबा है ना तो एलिप्टिकल बोली कहती। कमेट्स गुराक सन चारिपटे एटा भी पचार ना यहाँ हूँ कौ माने केमिति ऑर्बिट माने कौन करती इवॉल्व अराउंड माने कौ वे हो कौन ना एलिप्टिकल मैनर। दिस ऑर्बिट आर नॉट सर्कुलर बट आर elongated meaning a comet's distance from the sun changes significantly throughout its journey. Elongated path instead of a perfect circle a comet follows long oval path से गोटे सर्कल रे न बुलिकी ओभाल पाथ शेप बा एलिप्टिकल शेप रे बुलंती। Varying distance from the sun as the comets travel its elliptical orbit it gets closer to the sun at one point and then moves much further away at another point। जिते बुलूँ एमती गोटे पॉइंट आसो जो पॉइंट रे कि कमेट्स कौन हम ना सन को क्लोज हो पुणी हूँ बुली बुली केमी गोटे पॉइंट आसो से मैक्सिमम डिस्टेंस हो से कथा ए कहूँ आ पृथ्वी क्षेत्र भी से हुए ना। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन मौना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मौना लोआटा कहार गोटे एग्जाम्पल ताले मौना लोआटा गोटे कौन प्लेट्यू ना डीप सी ना कोस्टल प्लेन्स ना फोल्डेड माउंटेन। मौना लोआटा आमर एक्चुअली हूँ गोटे कौन से भोल्कानोटे ऑप्शन ए नहीं से गोटे भोल्कानर ना ऑप्शन ए नहीं है तो प्लेट्यू नुहे डीप सी नुहे कोस्टल प्लेन भी नुहे सब किसी नुहे। मौना लोआ एक्चुअली गोटे भोल्कानो माने भोल्कानो गोटे है तब एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना साइज हूँ मौना लोआ इज द लार्जेस्ट एक्टिव भोल्कानो ऑन अर्थ बाय बोथ मास एंड वॉल्यूम। यहाँ गोटे एक्टिव भोल्कानो जार कि मास एवं वॉल्यूम बहुत बड़। शेप हूँ आज सील्ड भोल्कानो यहाँ शेप हूँ सील्ड भोल्कानो यहाँ इट्स स्लोप आर ब्रॉड एंड जेंटली स्लोपिंग forming a long gradual incline rather than a sharp peak। এটা গোটে शार्प पीक न हो गोटे इनक्लाइन अवस्था अच्छे। जोग्राफिकल एक्सटेंट हूँ तो द सब एरियल पार्ट ऑफ द वोल्कानो एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ द आइलैंड ऑफ द सुमिट काल्डेरा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। हमर इकोनॉमिक सर्वे कहा द्वारा पब्लिश करा जाउछि किछि क्वेश्चन हम स्किप करने ना
ନାଇଁ ତାহলে ইকোনমিক সর্ভে আমার কাহা দ্বারা করা যাଉଛି मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कराऊँच कौटा ना इकोनॉमिक सर्वे ता विषय एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे देखी ना एबे कहले हु पब्लिश्ड इट ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देन आसला तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ए डिवीजन ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट्स द सर्वे प्रेजेंट किए करे ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हु प्रिपेयर्स इट प्रिपेयर करे किए ना इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया ये प्रिपेयर करे ये हूँ कौन करे ना पब्लिश करे ये हूँ कौन करे ना प्रिपेयर करे तो सर्वेटा को प्रेजेंट करे किए ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होएन माने केते बेले पब्लिश करा जाए ना द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलीज्ड एवरी ईयर ना प्रति वर्ष एटा करा जाए एमिति नहीं कि हमर जो 2 वर्ष करा जीव कि 5 वर्ष एमिति किछि नहीं ना प्रति वर्ष ही पब्लिश करा जाए टाइपिकली डे बिफोर द यूनियन बजेट बेसिकली एटा केबे करा जाए ना जब आम यूनियन बजेट आसे तार जस्ट बिफोर तो जस्ट पूर्व ही यहाँ कर कौटा ना इकोनॉमिक सर्वे देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5 ईयर प्लान को कंट्री रो बोरोड कराई ना यूएसए इंग्लैंड रूसिया ना फ्रांस कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5 ईयर प्लान आमर आछि काठो ना यूएसए सॉरी रशिया ठारू आमर 5 ईयर प्लान तब एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसएसआर माने रशिया द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ द सोवियत यूनियन व्हिच यूज्ड टू सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्व्ड एज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज अप्रोच जवाहरलाल नेहरूस रोल जवाहरलाल नेहरू को रोल से कौन थी ना आज द फास्ट प्राइम मिनिस्टर सी थे कौन आम फास्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू प्लेड ए पाइवोटल रोल इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान्स बिगिनिंग विथ द फास्ट 5 ईयर प्लान जोटा कि स्टार्ट होता 1951 ରୁ 56 देन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमिशन 1950 रे प्लानिंग कमिशन एस्टाब्लिश होता एथरू देख एक्स्ट्रा फैक्टर तुम केते कौन पाई जाउछ क्वेश्चन तो गोटे तुम कह आम क्वेश्चन देखीदेव आंसर देखिए पड़े सेमती ना क्वेश्चन गोटे बट एक्स्ट्रा फैक्टर मतलब बहुत क्वेश्चन कभर हो जाऊँगी 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता 1950 रे फास्ट जो फास्ट 5 ईयर प्लान समय पीएम प्रधानमंत्री किए थे से थे जवाहरलाल नेहरू सबकि कभर हो जाऊँगी ड्यूरेक्शन के 51 ରୁ 56 है then planning commission set up to formulate implement and appraise these plans ensuring comprehensive economic and social development first 5 year plan the first plan launched 1951 first 5 year plan लॉन्च करागला 51 आम ए कहले 51 ରୁ 56 ड्यूरेक्शन थिला प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर तार प्राइमरी फोकस कौन थी ना से एग्रीकल्चरल सेक्टर उपर फोकस करूला एवं एटा कहा पर्यवेसित थिला कहा मॉडल हारोल्ड डोमार मॉडल उपर पर्यवेसित थिला ना मन रखिबा देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड ऑप्शन ए टेक्सटाइल ना ऑप्शन बी एग्रीकल्चर ना ऑप्शन सी केमिकल्स ना ऑप्शन डी प्लास्टिक्स मल्टी फाइबर एग्रीमेंटा कहा सहित रिलेटेड थिला ना ये रिलेटेड थिला टेक्सटाइल सहित आंसर कह टेक्सटाइल सहित रिलेटेड थिला हमर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट तब विषय को एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे देखी ना द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट वाज ए 1974 ରୁ 1994 पर्यंत चलता इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट गवर्नड ग्लोबल टेक्सटाइल and garment trade by imposing costs on developing countries exports to developed nations departing from general GATT से चलता GATT जो GATT चलता बदल आमर आसला कौन WTO ना कौन एस्टाब्लिश थेला देन इट एम्स टू प्रोटेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू डोमेस्टिक textile industries from rapid import increases by establishing bilateral quota limits on exports from developing nations. The MFA was replaced by WTO.
Agreement on Textiles and Clothing ATC in 1995. ATC ର full form ହେଉଛି Agreement on Textile and Clothing, which set path for eventually removing these codes. Then देखिबा next. As per the 2011 census, the literacy rate of India is 94%, na 74.04%, na 88.80%, na 100%. इंडिया लिटरेसी के 100% थिला कि केबे नुह तार थिला केते 74.04% थिला इंडिया लिटरेसी रेट। हमना क्वेश्चन रहिला बा होमवर्क रहिला हम ओडिसा रे केते थिला ओडिसा रे लिटरेसी रेट केते थिला एटा कमेंट रे लिख एबे ही गूगल रे सर्च करके लिख जदि जानि तो भल कथा और जानि सर्च करके लिख जहाँ द्वारा सर्च करके लिखले कह हम तुम निजर ही ज्ञान माने कौन नॉलेज डेभलप हम। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कौन छी सी चंद्रमौली जी के आईएएस जन थे वाज एन रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिशनर ऑफ इंडिया फॉर द 2011 सेंसस। श्री चंद्रमौली थे कहार ना इंडियन जो सेंसस होता कहा ये माने तार हेड किए थे ना सी चंद्रमौली थे सी जड़े आईएएस ऑफिसर थे ताको कौन कहुए सेंसस कमिशनर बोली कहुए। टोटाल पॉपुलेशन से ना 121 कोटी आम जहाँ कहे 1.21 मिलियन बा 121 कोटी बोली कहुचे। टोटाल मेल्स होती केते टोटाल मेल पॉपुलेशन है 62 कोटी आसते टोटाल फीमेल का पॉपुलेशन 58 कोटी माने साड़ी के अच्छी एटा गोटे संख्यार कहीदेली। टोटाल लिटरेसी रेट हूँ 74.04%। नेशनल सेक्स रेशियो हूँ 940 1000 मेल रे 940 जन फीमेल एटा एक्चुअल हूँ 943 मे भी 940 एक्जाक्ट नुहे 943। पॉपुलेशन डेंसिटी हूँ 382 गोटे स्क्वायर किलोमीटर रे पॉपुलेशन डेंसिटी 382 एवं आम यदि कह पॉपुलेशन डेंसिटी सबुठ कौ स्टेट रे अधिक ना आमर बिहार रे अधिक आ सब कम कौटी ना अरुणाचल प्रदेश कम। अगर आम सिटी कथा कहवा ताहले जो खोर्धा ना भुवनेश्वर एमती किसी अच्छी तो एति ही मन रख स्टेट हूँ बिहार आ स्टेट कम हूँ अरुणाचल प्रदेश। देन देखा नेक्स्ट कौन रही इम्पोर्टेंट स्टेट्स एंड रिलीजियस। मोस्ट पॉपुलस स्टेट हूँ कौन ना उत्तर प्रदेश। देन होगा मोस्ट पॉपुलस मीटर्स मेट्रो हूँ दिल्ली एंड कोलकाता। देन आसला रूराल vs अर्बन 68.84% पॉपुलेशन लिव्ड इन रूराल पॉपुलेशन अर्बन रो देनी। अदर डाटा हूँ आम ग्रोथ रेट थी 17.64 यहाँ इम्पोर्टाट ग्रोथ रेट आम के 17.64%। देन आसला चाइल्ड सेक्स रेशियो हूँ 914 1000 मेल रे 914 जन अच्छा फीमेल। देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। डिवाल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस जो डिवाल्यूएशन होता माने यूएस डॉलर हिसाब से केते मसीह होता यहाँ होता 1991 मसीह पूर्व गोटे होता 1966 मसीह पर 1991 मसीह। अब सर एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना आमर गोटे यूएस डॉलर सॉरी हाँ गोटे यूएस डॉलर केतेटा इंडियन रुपीस तो सामान ना 88.09 माने 28 टका सहित आम 28 टका आम इंडियन रुपी देले गोटे यूएस डॉलर पाइबा। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द डिवाल्यूएशन ऑफ द इंडियन करेंसी इन द ग्लोबल मार्केट। यार कारण कौन माने यूएस गोटे डॉलर पे 28 टका देछ तार अर्थ आम इंडियन रुपी डिवाल्यूएशन घटुची ना। यदि आम कही गोटे इंडियन रुपी सहित 28टा यूएस डॉलर ताहले आम इंडियन रुपी कौन अच्छी ना आमर भैल्यू अधिक रही है। आम कहे गोटे यूएस डॉलर सहित आमर कौन ना 28टा इंडियन रुपी ताहले आमर रुपीर कौन हो डिवाल्यूएशन हो। Then after independence the devaluation of the rupees was majorly carried over the 3 times। 3 थर होती जमीक कि 66 होगला 91 आ गोटे मसीह पूर्व 47 बोधे नुह 47 होता आमर 1947
आउ गोटे है 66 आउ गोटे है 91 ये तीनटा ईयर ही आम 3 थर हो डिवैल्यूएसन देन नेक्स्ट The Ramsar convention is associated with option A biofuels, option B forest and option C wetlands and option D drylands. Ramsar convention आमर हेइथिला कोन पई ना wetland पई आमर प्रति वर्ष wetland डे केबे पालन करा होची ना फेब्रुआरी 2 की फेब्रुआरी 2 रे आमर पालन करा होची कोन ना wetland डे बोली एस्टे फैक्ट कोन देखि नबा The Ramsar convention signed in Ramsar रामसर हूँ कौट ना ईरान रो गोटे प्लेस ईरान रो गोटे प्लेस इन 1971 रे साइन होता इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूजेस ऑफ वेटलैंड्स इंडिया करेंटली हैज 91 रामसर साइट्स वर्तमान इंडिया रे 91 टा रामसर साइट्स रही जोटा कि recognized for their international importance as wetland इंटरनेशनल वेटलैंड थिले ही ताको आमे रामसर साइट रो मान्यता देई थाउ नहले कोन आमे जितक जगह ओदा जगह अछि आमे समस्त को रामसर साइट रो मान्यता देई देबा कि सेमिति नहे तार किछि इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रही थिबा दरकार टोटल नंबर ऑफ 2025 सुधा हम रामसर साइट आमे कहले 95 रही छी एवं हमरा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिया रे जो रही छी हाईएस्ट नंबर ऑफ साउथ एशिया रे हाईएस्ट नंबर एटा फास्ट साइट कोटा हमर थिला ना चिलिका लेक ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान एटा थिला हमर फास्ट देन एटा को रिकॉग्नाइज करा थिला 1981 मसिया रे केवलादेव और चिलिका को रामसर साइट रो माने थिला 1981 मसिया रे कोन फास्ट ए दीटा ही ऐड हितला रिसेंटली जोटा माने ऐड हेची सेटा होची कोन राजस्थान रो खिचन आउडा होची मेन्नार राजस्थान रे दीटा रिसेंटली ऐड हेची जोटा कि 90 और 91 बोली कहउची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डुडुमा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर डुडुमा वाटरफॉल दा हमर को रिवर रे लोकेट करूची ऑप्शन ए महानदी ऑप्शन बी इंद्रावती ना ऑप्शन सी माचकोन ना ऑप्शन डी बैतरणी हमर डुडुमा वाटरफॉल लोकेट करूची कोठ ना माचकोन एक्स्ट्रा पैड कोन छी देखि नबा लोकेशन होची कोन सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ताले एटा अछि कोठ ना रिवर होची माचकोन नदी रे अछि माचकोन नदी रे अछि हाइट होची 175 मीटर बा 574 फीट बोली कहउची अट्रैक्शन को पई इट इज ए ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर पिकनिक स्पॉट इन द रीजन एटा गोटे मोस्ट पॉपुलर पिकनिक स्पॉट एटा एनवायरनमेंट जो सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट द्वारा एटा सराउंडेड हेजी को डिस्ट्रिक्ट रे अवस्था ना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रिवर माचकोन रिवर देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट रे हमर लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही मध्य प्रदेश ना तमिलनाडु ना बिहार ना केरल आ भीतर को स्टेट रे नाही नो को स्टेट रे अछि एटा हला ए नो डाउ काटि दियो नो नो को स्टेट रे अछि हमर बिहार रे अछि हमर इंडिया रे 6टा स्टेट रे रही छी जेमते हे गला कोन बिहार रे आसी गला यूपी हे गला देन आंध्र प्रदेश तेलंगाना आ कोन हमर महाराष्ट्र आ गोटे कौन रहा कमेंट सेक्शन में मत जनइब कर्णाटक ना ये 6टा स्टेट रे हमर रही कौन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखि नबा 6 इंडियन स्टेट्स करेंटली हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एटा आसिलानी बा ता कोजे बाई कैमरल लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश रे अछि बिहार अछि कर्णाटक महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश ए 6टा रे ही अछि हमरा द लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो कॉल्ड विधान परिषद ताको हमें आ कोन कहउछि ना विधान परिषद बोली कहउछि इज द अपर हाउस ऑफ द बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर विथ द विधान सभा बीइंग द लोअर हाउस देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन B.R. Ambedkar was elected in the Constituent Assembly
को कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम बी आर आंबेडकर बिलंग्स करती आंसर है जो वेस्ट बेंगल से बिलंग्स करती वेस्ट बेंगल कन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बिलंग्स करते एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखी ना yes Dr. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly of India twice. His initial election was 1946 from the Jaisur Khulana constituent Bengal province. However, after the partition in 1947, when that constituency went to Pakistan, he was re-elected to the Constituent Assembly on his from Bombay Presidency. Secondly, se heitile Bombay Presidency. First se elect heitile Bengal Province. Next question देखिबा जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन तापर आपण मन पई क्वेश्चन ऑफ द डे रहिछि आंसर करि कि निश्चिंत भाबे जिवे लास्ट क्वेश्चन होछि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स देयर इन इंडिया इंडिया रे हमर हाई कोर्ट केतरा अछि एटा समस्त जानिथिबो केतरा अछि 25 टा अछि अरे एक्स्ट्रा फैक्ट कौन देखि नबा सॉरी अरे एक्स्ट्रा फैक्ट किछ रखिने तबे क्वेश्चन ऑफ द डे देखि नबा आज क्वेश्चन ऑफ द डे रोची कमेंट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन ना अर्थ ना वेनस ना मून एटा रहला आज होमवर्क पूर्व गोटे होमवर्क देती यहाँ गोटे रहा दुटा होमवर्क आंसर कमेंट सेक्शन में जनइब कमेंट्स गुड़ाक क्या चारिपटे बुलाती आंसर निहाती भाव करके देन आज पीडीएफ केमती पाइबे सेटा कहूँ पीडीएफ पाइप जॉइन हो जातु आम रही एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट गोटे टेलीग्राम चैनल रही से जॉइन हो जातु से आपको सब क्लास पीडीएफ मिल जाए सहित आम जेकोसी एग्जाम नोटिफिकेशन होगा कि जहाँ भी रहा अपडेट सबू कि रिजल्ट होगा से अपलोड रोचे एबे ही जॉइन हो जातु आम टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट कोचिंग पॉइंट और जो मैंने ये वीडियो को लाइक करना दयाकोरी गोटे गोटे लाइक निहाती भाव कर जातु जी वीडियोटी भल लगी थाए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर रखु नेक्स्ट वीडियो पाइबापी नेक्स्ट क्लास आम आणुचे हिस्ट्री माराथन आने 100 क्वेश्चन माराथन तो सब्सक्राइब कर रखी था आम इम्पोर्टाट और सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन ही आणुचे माने एंशिएंट मिडिवल एवं रहा जो मॉडर्न हिस्ट्री मिसेक आम 100 माराथन आणुचे प्रीवियस ईयर PYQ को बेस करके वीडियो को शेष पर्यटन देखि समस्त धन्यवाद।